deriving this particular theory or understanding this particular theory. So what are those assumptions? Let us go for that. The assumptions. Sometimes they will ask you these assumptions in exam for 2 to 3 marks. Okay, only the assumptions. What are the assumptions we have made? The very first assumption which we have made in this particular theory is the material is homogeneous and isotropic. Okay, the very first one is the material which we have used. Real is homogeneous and isotropic. What do you mean by this? Have you heard these terms before? Homogeneous and isotropic. मतलब the material behaves equally in all directions. Okay, isotropic मतलब isotropic material they behave isotropic तो common property होता है mostly engineering materials का because अगर उनको heat करते हो तुम तो equal expansion होगा in all directions. That is the isotropic material. But homogeneous important है यहाँ पे कि we have that shear modulus is fixed over the entire cross section. There can be such materials. There are some materials जिनका shear modulus surface पे अलग होता है और core में अलग होता है. If you go for some of the polymers, okay, they have high surface resistance but not the core resistance. So because their shear modulus is varying across the cross section also. But here we have assumed G is constant. That is the reason why the material should be homogeneous. Whatever we have assumed. Most of the metals they are homogeneous. Okay. The second one is Hooke's law is obeyed because we have used G is equal to tau by phi. So Hooke's law obey होना चाहिए तभी ये मैं relation use कर सकता हूँ, right ना? So therefore Hooke's law is obeyed. This is the second assumption which we have made. मतलब वो assume किया ही हमने because वो equation वहाँ पे use किया. If you remember, G is equal to tau by phi लिखा मतलब it was the material is satisfying the Hooke's law, right? बाद में हमने सब ये जो derivation किया वो that was for circular cross section because most of the time torsion में shaft ही होता है. Rectangular shaft के ऊपर torsion हम करते ही नहीं because torsion is twisting moment. Twisting is generally for circular shafts, hollow circular shafts and those kind of things, right? So therefore we have assumed a circular cross section. Okay, तो हमने जो shaft लिया है is of circular cross section. This is also we have assumed. Now अभी ऐसा कभी कभी हो सकता है कि फॉर फ्यू ऑफ द मटेरियल जब हम लोग ट्विस्ट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन कम होता है ज्यादा होता है बट हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया है कि क्रॉस सेक्शन रिमेन्स आइडियल उसका जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्रॉस सेक्शन में रेडियस में डिस्प्लेसमेंट चेंजेस नहीं आ रहे ओनली देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट इज व्हाई देयर इज ओनली प्योर shear stress which is developed on the surface. Are you understanding it? समझा क्या क्रॉस सेक्शन रिमेन्स यूनिफॉर्म दैट इज व्हाट द अजम्पशन वी हैव मेड क्योंकि उसके क्रॉस सेक्शन में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हमने कंसीडर नहीं किए ये थियरी में राइट सो दिस इज द अजम्पशन फोर्थ अजम्पशन इज द क्रॉस सेक्शन remains uniform. The cross section remains uniform throughout the torsion. Whatever the torque you have applied, उसके लिए cross section क्या था? Similar रहेगा. Now यहाँ पे जब हम लोग ये लोड दे रहे हैं तो हमने एक ही मोमेंट यूज किया है टॉर्क विच इज अप्लाइड बट वो जो बार है उसके ऊपर उसका सेल्फ अटैक करेगा उसके ऊपर कोई टेंसाइल लोड है क्या कंप्रेसिव या फिक्स्ड है उसकी वजह से कुछ आ रहा है क्या दैट वी हैव इग्नोर्ड ठीक है सो वी हैव अज्यूम्ड दैट ओनली प्योर टॉर्क इज कंसिडर्ड प्योर टॉर्क इज कंसिडर्ड बाकी कोई भी उसका सेल्फ वेट या कुछ भी हमने कंसिडर नहीं किया सो दिस इज आल्सो द अजम्पशन व्हिच वी मेड राइट सिक्स्थ वन नाउ व्हाट कैन बी द नेक्स्ट अजम्पशन any other assumption which comes to your mind what should have been there तो देखो अगर तुमने डायग्राम देखा रहेगा तो मेरा डायग्राम ऐसे था सॉरी
ये क्रॉस सेक्शन था मेरा, राइट? कोई बंदा किचन में काम कर रहा है। दिस इज द एक्सिस, राइट? जब इसके ऊपर मैंने टॉर्क अप्लाई किया तो ये ट्विस्ट हो गया, ये जो एक्सिस है वो टर्न हो गया, राइट? बट ये जो प्लेन है, ये एक ही प्लेन में रह के ट्विस्ट हो रहा है, राइट? उसका प्लेन चेंज हो रहा है क्या? प्लेन ऐसा हो गया क्या? प्लेन ट्विस्ट होके ऐसे आगे की तरफ झुका नहीं ना प्लेन, सॉरी। ठीक है, दिस प्लेन, ये जो प्लेन है, समटाइम्स मे बी पॉसिबल दैट ये जो एंगल है वो ऐसे प्लेन में ट्विस्ट हो जाए, ऐसे। मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो प्लेन ऐसे ये था वो ऐसे झुक जाएगा या फिर ऐसे पीछे झुक जाएगा। ठीक है, जो प्लेन तुम्हें ऐसे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो खाली ट्विस्ट हो रहा है ऐसा एक ही प्लेन में, बट इट इज नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, सो दिस इज आल्सो वी हैव अज्यूम्ड। प्रैक्टिकली इट मे बी पॉसिबल, प्रैक्टिकल में ये सब कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ एडिशनल लोड, सेल्फ वेट होता है रॉड का। Getting it? There are so many other things, but which we have not considered in this pure torsion theory. Okay, so therefore, what I need to write down here is the right. Yeah, the cross section rotates in a given plane. जो भी plane था उसका उसी plane में वो rotate होता है, does not changes the plane, plane change नहीं होता। ठीक है, so that is also we have considered. Otherwise क्या होता, अगर ऐसा plane change होता तो you will see that कि अगर ये plane change हो गया, ये cross section बाद में ऐसा हो गया, तो ऊपर वाले फाइबर जो ऊपर अपर हाफ में जो फाइबर्स है उनका लेंथ बढ़ेगा और लोअर हाफ वाले फाइबर्स का लेंथ कम होगा, मतलब उनमें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आएंगे, तो जो हमने कंसीडर फिलहाल नहीं किया है। So that is why we are assuming it is pure torsion. Okay, understood this part? Any doubt till now? Yes or no? No, sir. No, sir. Okay. So now let us go for the next part. Let us solve some numericals based on this. Or before going for numerical, let us recall the next part, which is power transmitted by the shaft. What is power? Anybody knows the formula for power? What is power? सबने फिजिक्स पढ़ा है, सबने मैकेनिक्स पढ़ा है, तो पावर पता होना चाहिए। What is power? Yes. Anybody? I would like to call someone from your side. और लास्ट टाइम का नंबर्स मैंने नोट डाउन किया था, उनको मार्क मैंने किया एब्सेंट, तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, बैठे रहते। ओके, आई हैव टू डू इट, अदरवाइज 100% अटेंडेंस आएगा। यस, W/T। आनंद रुक जा, तू है मुझे पता है। लेट मी कॉल दोज हु आर स्लीपिंग। Sir, force into time. Wait a minute. Prashant Moria, are you there? Make A49. $59 Gayatri. Make B36 Mayank. $52 Kishan Yadav. मैंने कौन से नंबर बोले? A49, A59। Sir, 52 make B। अच्छा, चिल्ला के वो नहीं है, make B 52 है क्या? Sir, किशन। हाँ बोलना Sir, किशन। work upon time power। ओके गुड, वर्क मतलब है तू जगह पे, वर्क अपॉन टाइम। ओके, नाउ हाउ विल यू सपोज अगर एक शाफ्ट है which is rotating at a particular rpm, how much power it is going to transmit if you know the torque? Can you have formula for that based on this particular work upon time? Yeah, sum of from make B, let me call
McB roll number 4 Akash Chandra, are you there? Yes, sir. है ना? Very good, very good. अब बता फिर आगे भाई. Yes, continue. Sir, what is sir torque to RPM? हाँ, Sir, torque to RPM में तो 28 roll number Siddhant, are you there? McB. सर पावर बाय स्पीड कर सकते हैं. Power में? पावर बाय स्पीड Okay, इन आरपीएम. सो सर टॉर्क पता रहेगा तो पावर बाय टॉर्क करके. good, good, good. Okay, fine. Now एक दो और नाम ले लेता हूँ, रुको जरा. 43 McB पूजा. Make A29 Ambesh Kumar. Yes, sir. 43 make me. अच्छा है तू, बोलो. Power by speed. पावर बाय स्पीड. पावर का फॉर्मूला पावर बाय स्पीड कैसे आएगा? Torque into speed. टॉर्क इनटू स्पीड. सो अच्छा चलो मैंने लिखा टॉर्क इनटू स्पीड. स्पीड मतलब कौन सा स्पीड? लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, कौन सा स्पीड? Angular speed, एंगुलर स्पीड. ओके. tau by omega. टाउ बाय ओमेगा मतलब इनटू गलत Tau लिखा. into it, sorry, tau into omega. इनटू ओमेगा. Is it correct? Any other? SE McB 10. Yes, yes. Are you there? No? Not there. Very good. ठीक है, चलो. So we have 4 to 5 students identified, those who are sleeping. Okay, fine. So Shear, just note down these and ask them to meet me after the lecture. मतलब text me after the lecture. Fine. So A and B वाला देखो कौन कौन है, दोनों जन. अच्छा पहले CR के देखते हैं. शाम भाई are you there? तो वो भी बैठे रहेंगे. ओम, रोहित यादव. Yes, sir. Yes, sir. है ना तुम लोग तो? नहीं तो मैं हाँ, तुम्हारे sir. ऊपर भरोसा नहीं. नहीं सर है. ओके, गुड गुड. फाइन. तुषार तो रहता ही है, उसका आवाज आता है. ओके फाइन, थैंक यू. सो जस्ट इन्फॉर्म देम. ओके, सो वर्क अपॉन टाइम. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन गो फॉर पावर. तो वर्क क्या होता है? बेसिकली वर्क हमने पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. टाइम को तो ऐसे लिखते हैं, बट ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी, बराबर ना. बट अभी यहाँ पे जो है वो रोटरी मोशन है. ठीक है, तो रोटरी मोशन है तो वेलोसिटी जो शाफ्ट का है वो एंगुलर वेलोसिटी होगा. तो एंगुलर वेलोसिटी होता है आर ओमेगा. ये भी सबने पढ़ा है, v इक्वल आर ओमेगा. और f इंटू आर क्या होता है? टॉर्क. सो इट इज टॉर्क इंटू ओमेगा, बराबर. अरे ना, फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो हमें डिराइव करने आना चाहिए. सो आई वाज नॉट नोइंग इट. लेट्स सी वी हैव डिराइव्ड इट. टॉर्क इंटू ओमेगा. बट व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा इज, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ओमेगा इज 2 पाई 2 pi by 2. बाय टाइम पीरियड या फिर 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, बराबर ना. सर 2 pi f. हाँ, तो 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. नाउ ये फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ आरपीएम डिवाइड बाय 60, वेयर n इज इन आरपीएम, revolutions per minute, when n is in rpm, right? So what is my power ka formula? It is 2 pi n t by 60. This is equal to your power, which will be in watts, right? Where n should be in rpm, that is revolutions per minute. So this formula we can use anywhere whenever the power is to be transmitted by the shaft. Okay, have you understood this? Power transmitted by the shaft. Yeah. Now let us solve some question.
Let us solve some question. अच्छा डबल आ गया क्या? हमने कर दिया. Let us solve example 5.1. Determine write down the question. The diameter of a solid shaft which will transmit 300 kilowatt power at 250 rpm and the conditions to be satisfied are, मतलब कुछ कंडीशन दिया है कि एक शाफ्ट हमें डिजाइन करना है. अभी कितने डायमीटर का शाफ्ट लगेगा हमें पूछा है, जो कितना ट्रांसमिट कर रहा है 300 kilowatt. It is transmitting at a rpm of 250, but there are some conditions which are to be satisfied. The very first condition is the twist in the shaft should be less than 1 degree. In length of 2 meters. मतलब शाफ्ट का लेंथ अगर 2 मीटर है तो उसमें ट्विस्ट कितना लेस देन 1 डिग्री आना चाहिए, और मैक्सिमम 1 डिग्री. ओके. नाउ सेकंड, maximum shear stress in the material should not exceed 30 MPa. Okay, should not exceed 30 MPa, and the value of G is given to us. The material value of G is 1 into 10 to 5 MPa. ओके, तो देखो एक शाफ्ट बोला है कि हमें एक शाफ्ट तुम्हें डिजाइन करना है जिसका डायमीटर तुम बताओ. मटेरियल हमें दिया है, अभी जी का वैल्यू 1 into 10 to 5, मतलब ये स्टील मटेरियल है. स्टील का मटेरियल हमें पता है कि स्टील का शाफ्ट डिजाइन करना है, बट उसका डायमीटर कितना रखना है सो दैट वो टूटना भी नहीं चाहिए और उसमें ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा मटेरियल भी यूज नहीं करना है. आई वांट दैट कि देयर शुड बी 2 कंडीशन व्हिच हैव टू बी सैटिस्फाइड. वन इज द ट्विस्ट एंगल कंडीशन. जब भी देखो कोई भी एक शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हमारे व्हीकल्स में भी ट्रांसमिटिंग शाफ्ट होता है, इंजन से वो व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करता है. तो वो जो शाफ्ट है वो खुद भी ट्विस्ट होता है, बट वो ट्विस्ट 1 डिग्री से कम रहेगा तो दैट इज पॉसिबल. मटेरियल ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा, राइट. एंड उसमें जो स्ट्रेसेस आ रहा है वो 30 MPa है, वो मैक्सिमम कंडीशन दिया है. 30 से ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो मटेरियल रैप हो जाएगा, वो दिखेगा ट्विस्ट हो रहा है करके मटेरियल, एंड वो बाद में टूट जाएगा. सो देयरफॉर वी वांट दिस कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड. एंड हाउ मच मैक्सिमम या मिनिमम डायमीटर आई कैन, मैक्सिमम तो कितना भी डायमीटर, अगर मुझे पता है कि ऐसा करना है तो जनरल क्या करेंगे लोग, चलो एक छोटा सा डायमीटर का रॉड यूज किया, वो टूट गया तो उससे बड़ा वाला लो, नहीं टूटेगा. दैट इज यूजर अंडरस्टैंडिंग. बट हाउ टू कैलकुलेट इट, how much should be the minimum requirement of this particular condition. ऐसा minimum diameter कौन सा है जो दोनों satisfy करता है? Let us find out that. तो कैसे solve करेंगे? तो see here, let us first find out power दिया है हमें. Power is equal to 300 kilowatt. So let us write down that power is equal to 300 kilowatt. Okay, that can be converted later on. The RPM, that is N, is given as 250 RPM, revolutions per minute. Okay, the tau maximum value is given to us is 30 MPa. इससे कम होना चाहिए, तो we'll assume that is maximum value, tau maximum. And your twist angle theta is given as 1 degree, but we don't want in degree, हमें वो रेडियन में चाहिए. अगर तुमने डेरिवेशन में देखा है तो मैंने थीटा को रेडियन में लिखा था. So can you convert 1 degree to radian? It will be pi by 180. कितना आता है ये आंसर बताओ जरा. 57.7. Yes, quickly. .017.
करेक्ट है ना? Yes, sir. हाँ, the value of G is given as 1 into 10 raised to 5 MPa. Right, this is everything is given. Now let us solve for first condition. Is condition 1. Condition 1 क्या है कि the angle of twist. अभी देखो मुझे टॉर्क पता है, सॉरी मुझे मैक्सिमम shear stress पता है, ठीक है, और रेडियस मुझे फाइंड करना है. सो टॉर्शन इक्वेशन है मेरे पास. टॉर्शन इक्वेशन क्या क्या है? T by R is equal to, what is the torsion equation? बताओ जरा, अभी पढ़ा ना हमने. Tau by R is equal to T by J is equal to G theta by L. तो अभी देखो मुझे थीटा के टर्म्स में अगर फाइंड करना है कंडीशन 1, तो मुझे G theta by L तो रखना पड़ेगा, ठीक है. तो मेरे पास तीन टर्म्स है, एक है टॉर्क वाला, एक शेयर स्ट्रेस वाला और एक थीटा वाला. तो फिर थीटा वाला टर्म तो रखना पड़ेगा बिकॉज वही कंडीशन है मेरा, राइट. एंड ये दोनों में से मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पता है, तो आई विल यूज द those two conditions. So I will write down tau maximum और small r के बदले अभी मैं लिखूंगा capital R, which is the maximum radius, is equal to G theta by L. Okay, G theta by L. Now what is tau maximum? 30 MPa. इसको मैं लिखता हूँ diameter by 2. G का वैल्यू 1 into 10 raised to 5. थीटा 1 डिग्री मतलब कितना है? 0.017. एंड लेंथ कितना बोला है हमें? 2 मीटर. You can see there 2 मीटर का लेंथ, ये 2, ठीक है. तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू बताओ मुझे. ये डी बाई 2 है, 2 ऊपर जाएगा, राइट ना, तो 60 हो जाएगा ये. तो इट विल बी डी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.017 इंटू 10 raised to 5. बताओ कितना आंसर आता है? 0.070. 0.070. 0.0705. Yes, sir. 0.0705. Mistake we have done. Some mistake we have done. What is that mistake? Is this tau maximum is in MPa. MPa का मतलब है Newton per millimeter square. So therefore this has to be also in millimeter, right ना? ये G का वैल्यू भी, G का भी यूनिट वही है ना, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे कितना लिखना चाहिए था? 2000. तो यहाँ पे आएगा 2000. हाँ अभी बताओ. 70.58. 70.58 मिलीमीटर. I understood. एक मिस्टेक किया मैंने तो रेक्टिफाई भी कर दिया. This is the diameter which I am getting by satisfying condition 1. मतलब अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई करना है तो तुम्हें कितना डायमीटर चाहिए? एटलीस्ट 70 mm से 70.58 mm का डायमीटर चाहिए, ठीक है. बट लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि फ्रॉम कंडीशन 2 व्हाट इज द डायमीटर आई एम गेटिंग फ्रॉम कंडीशन 2. कंडीशन 2 क्या है कि मैक्सिमम शेयर. ओके 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 ओके, सब मिस्टेक किया मैंने. इग्नोर दिस एवरीथिंग. आई विल जस्ट condition 1 and condition 2 में we have made some mistake. Wait a minute, I'll come back to this here. See here, in condition 1 I should not use condition 2 वाला value because they are independent. Let me, I want to think of कि दोनों में क्या होने वाला है. Let us, we know the power first, we know the RPM first. Can I calculate torque? Yes, we can. Let us first find out that power is equal to 2 pi nt by 60. मुझे बताओ कितना आएगा ये. पावर सब्स्टिट्यूट करो. पावर का वैल्यू है 300 इंटू 10 raised to 3 लिखना पड़ेगा किलोवाट. 2 पाई एन का वैल्यू है 250 इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय 60. गिव मी द वैल्यू ऑफ टॉर्क. 11459.15. 11459.155 115. न्यूटन मीटर आएगा, राइट. टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, बिकॉज ये वैट में है. पावर हमने किस में रखा था? पावर वैट में रखोगे तो टॉर्क का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर, बट यू वांट इन मिलीमीटर. देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 3 जीरो से शिफ्ट करता हूँ तो 11.459 इंटू 10⁻³ और मीटर का मिलीमीटर में किया इसलिए 10⁻³ और एक बार. सो दैट विल बी 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर. अंडरस्टूड? टॉर्क कहाँ से आया? हाँ, नाउ यूज दैट टॉर्क वाला फॉर्मूला हियर विदाउट यूजिंग दिस वन बिकॉज दिस इज कंडीशन 2. कंडीशन 2 को कंडीशन 1 में यूज नहीं करने का. तो हमें टाउ बाय जे
is equal to g theta by l. See here tau maximum मैंने यूज नहीं किया, which is in the condition 2. So independently condition 1 सॉल्व करूंगा मैं. टॉर्क का वैल्यू मुझे पता है 11.459 10 raised to 6. J का फॉर्मूला मुझे पता है pi by 32 d raised to 4, राइट ना. सॉलिड शाफ्ट है तो pi by 32 d raised to 4 into is equal to 1 into 10 raised to 5 into theta is your 0.017 upon length is your 2000. So when you solve everything to get the diameter d, you will get the answer. Tell me the diameter d. पहले तो d raised to 4 आएगा, उसका fourth root लेना पड़ेगा. So there's some bit of calculation involved. Do it carefully. अगर मैं d raised to 4 के लिए लिखता हूँ तो d raised to 4 will be equal to 11.459 into 10 raised to 6 into 2000 divided by, अच्छा into 32 भी आएगा यहाँ पे, divided by pi into 0.017 into 10 raised to 5. तो ये आएगा d raised to 4 and then उससे d मिलेगा तुम्हें. Give me the answer in millimeter. One zero eight point two five. 108.25. 108.25. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा डायमीटर. नाउ लेट अस गो फॉर कंडीशन 2. देखो कंडीशन 2 में आई शुड नॉट यूज कंडीशन 1, मतलब मैं थीटा यूज नहीं कर सकता. तो ये दो टर्म्स बचते हैं टॉर्शन इक्वेशन के. T by J, टॉर्क तो सेम ही रहेगा. तो टॉर्क कितना है 11.459 10 raised to 6 डिवाइडेड बाय J कितना है pi by 32 d raised to 4. ओके, टाउ मैक्सिमम कितना है 30 MPa दिया है और ये r मतलब क्या है, तो ये d by 2 है. तो यहाँ पे एक d कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 16 हो जाएगा. तो मेरे पास बचा क्या, तो मैं d क्यूब इक्वल टू लिखता हूँ. तो d क्यूब इज इक्वल टू ये तो कैंसिल हो चुका है. तो इट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 11.459 into 10 raised to 6 divided by pi into 30. Okay, and get the value of d. 124.83. 124.83. 1.83. 0.83. Yes, sir. But that answer 124.83 बराबर. ठीक है. Now tell me, हमें दो आंसर्स मिला डायमीटर का. Which diameter you will select? Tell me. जो भी बड़ा वाला होगा वो. बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला लेंगे. बड़ा वाला क्योंकि बड़ा वाला अगर लेंगे तो वो छोटे वाले को भी सेटिस्फाई कर लेगा, मतलब वो कंडीशन. अगर छोटा वाला लेंगे तो वो बड़े वाले के लिए फेल हो जाएगा, टूट जाएगा वो, मतलब से बड़ा कंडीशन. So I can if I go with 108.25 mm वाला diameter, so it will surely satisfy my condition 1 but not the condition 2. And here what is the statement? Determine the diameter of a solid shaft which will transmit 300 kW 250 and condition to be satisfied. मतलब दोनों condition satisfy कर लें. शाफ्ट जो भी हम लोग डिजाइन करेंगे it should be enough capable of satisfying both the conditions. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला आपको जो लार्जर डायमीटर होगा वो दोनों करेगा. बिकॉज 124 लिया मतलब कंडीशन 2 तो सेटिस्फाई हो गया एंड कंडीशन 1 की बात ही नहीं है बिकॉज वो तो कम रिक्वायरमेंट है उसका. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो देयरफॉर द shaft of diameter is equal to diameter greater than 124.83 mm can be selected. Why I have written greater than 124.83? 124.83 minimum है. अभी 124.83 एक रैंडम वैल्यू है, राइट? हम लोग शाफ्ट बनाते वक्त कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज में ही बनाते हैं. 125 mm, 126 mm, 128 mm. आर अंडरस्टैंडिंग? 124.83 इतना एकदम कट टू कट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 124.83 करो या 126 करो, मटेरियल कॉस्ट उतना ही लगता है. उतना स्मॉल चेंजेस इन द डायमीटर मच डज नॉट हैम्पर यू द मटेरियल वाइज, राइट? उतना ज्यादा नहीं हैम्पर करेगा. सो देयरफॉर 124.83 इज द मिनिमम वैल्यू. देन अभी मैन्युफैक्चरर के पास कौन सा, अगर तुम्हें मार्केट से खरीदना है तो मार्केट में अगर 120
5 का अवेलेबल है तो यू कैन गो फॉर 125. ठीक है, तुम मार्केट वाले को बोलोगे नहीं कि भाई मेरे को 124.83 चाहिए, तो तुम मशीन करके लेथ मशीन में डाल के उसका कम करके दे डायमीटर. इतना रिक्वायरमेंट नहीं है. वी हैव कैलकुलेटेड द मिनिमम रिक्वायरमेंट. वी कैन ऑलवेज गो अबो. ठीक है, क्योंकि 125 वाला वाला डायरेक्टली अवेलेबल है, तो जो स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है उनको परचेज करना सिंपल होता है एज कम्पेयर टू अगर मैं ड्राइंग दूंगा मार्केट में और बोलूंगा कि 124.83 का बना के दो, तो इट विल वो स्पेशल मेरे लिए बनाएगा तो उसके लिए अलग से कॉस्ट लेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? समझा? यस सर, यस सर. Yes, sir. तो जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट किया, उसके बाद जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है मार्केट में वो खरीदो. ठीक है, या हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर एक डाउट है. बोलो. सर जो हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है, मतलब ट्विस्ट इन शाफ्ट दिया है, वो डिग्री में दिया है, मतलब वो हम पता कैसे चलेगा भी कि थीटा का एंगल दिया है कि फाई का एंगल दिया है? कौन सा एंगल ऑफ ट्विस्ट? थीटा ही होता है, फाई नहीं. फाई इज द शियर स्ट्रेन. तो फाई अगर देंगे तो वो क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे फिर अगर हमें फाई दिया है? एंगल ऑफ ट्विस्ट ही बोलेंगे, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा होता है. ओके, फाई एंगल यू कैन नॉट मेजर. तो थ्योरेटिकली हमने देखा, प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, बट थीटा एंगल यू कैन मेजर. वो कैसे मेजर करेंगे उसका, वी हैव अ torsion machine in which torsion experiments can be done. I will show that, but virtually वो उतना अच्छे से दिखता नहीं है जो हमने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, वो रॉकवेल हार्डनेस, बट स्टिल इट इज नॉट दैट. But now the situations are getting over, and surely in next, I guess in next 1 month you will be joining the college show. तो वो टाइम पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि how to measure it practically, how to measure that twist angle practically, and angle वो जो sharp twist होता है तो कैसे दिखता भी है. ठीक है, but otherwise you can go to YouTube and you can search for twist angles of shaft or torsion videos. You will there are some experiments जो torsion, write a simple keywords torsion machine experiment or torsion of a shaft. ठीक है, torsion experiment on a shaft. You just enter it, you will see a machine and उसके ऊपर पूरा animated videos भी तुम्हें मिलेगा. ठीक है, go through it, and if I found some such, I will post it in your Google Classroom so that you can go through that. Okay, fine. Any other doubt? Acha, can you tell me what is the unit for polar moment of inertia? Yes, सेम ही रहेगा ना सर? it's same. हमने कुछ नहीं किया उसमें, खाली ऐड किया है. एडिशन में यूनिट नेवर चेंजेस, राइट? ठीक है, polar moment of inertia is millimeter raised to 4 only. It doesn't changes. Whenever we talk about polar moment of inertia, it is to be about z axis, that is I axis का y. ठीक है, nothing has to be changed. Okay, ठीक है. Any other doubt? So let us have one more question and then we will stop for the today. Okay, so let me go to the next question. Just a minute. One more slide I need to add. Example 5.2. Okay. Now let us take some. Let us take some different question. Yeah. A hollow steel shaft. A hollow steel shaft having internal diameter half the external diameter.
having di is half of the outer diameter. Okay, inner diameter and outer diameter अभी hollow shaft है तो उनका relation हमें यहाँ पे दिया है, ये भी होने, ठीक है. Transmits 147 kilowatt at 225 rpm. Okay, if the maximum allowable shear stress is 6 MPa, or not 6 MPa, 6 kilonewton per centimeter square, and the angle of twist is not to exceed 1 degree in length of 20 times the external diameter. Determine the suitable section assuming capital G equal to 10⁴ kilonewton per centimeter. Okay, now see the question में थोड़ा सा change है. We have a hollow shaft instead of this shaft, instead of solid shaft. So see here, what are the things given here? The very first thing is power given. It is 147 kilowatt at RPM, 225 RPM. Okay, so first of all, let us calculate torque. What is, how to calculate torque? So power is equal to, formula क्या है हमारा? Okay, power is equal to 2 pi nt by 60. What is power का value? 147 into 10⁻³ is equal to 2 pi. RPM is 225 into T. Torque as it is upon 60. Yes, can you tell me the value of torque? First it will be Newton meter, then you have to convert it to Newton millimeter. Yes. 6238.87. 6.2 into 10⁶ Newton millimeter. अच्छा 6.28 into 10⁻³ meter में और 6.28 into 10⁶ Newton millimeter, right? So this Yes, is sir. So 23. अच्छा 28 23 कौन correct है? So 238. 238. 238 है. Yes, sir. 24 ले लो ना. ठीक है 24. ओके फाइन. तो टॉर्क हमें मिल गया. अभी क्या करना है हमें? कंडीशन 1, दो कंडीशंस यहाँ पे भी है. तो कंडीशन 1 है एंगल ऑफ कौन सा है? मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस है. तो कंडीशन 1 में दिया है कि टी मैक्सिमम इज हाउ मच? 6 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बट ये यूनिट नहीं चलेगा ना, हमें तो न्यूटन पर मिलीमीटर में चाहिए. तो 6 एज इट इज, किलो मतलब 10⁻³ हो गया न्यूटन में. हाउ विल यू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर? 10⁻² मतलब 10⁻² millimeter. डिवाइड करें. सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. 10⁻². हाँ 2 आएगा ना. 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 10⁻². ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 MPa. बराबर. हाँ, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? T by J is equal to tau maximum by
R, बराबर. तो T कितना है टॉर्क? 6.24 into 10 raised to 6 divided by J is pi by 32 capital D raised to 4 या फिर DO raised to 4 minus DI raised to 4, बराबर ना. hollow है shaft, inner diameter raised to 4 and tau maximum is 60. R is DO by 2. Are you understanding it? बराबर लिख रहा हूँ मैं. Yes, sir. ये कैलकुलेट क्या करना है? DO तो कैसे करेंगे? तो देखो 6.24 into 10 raised to 6 pi by 32. अभी देखो दोनों में से अभी DI कितना है, तो यहाँ पे दिया है कि DI is 0.5 times DO, बराबर ना. और 0.5 मतलब, तो मैं इधर ये पुट करता हूँ यहाँ पे, तो DI raised to 4 मैं कॉमन ले सकता हूँ, बराबर. या फिर DO, अगर देखो DO कैंसिल होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, DI को इन टर्म्स ऑफ DO पुट करता हूँ, तो DO raised to 4 बाहर आ जाएगा. इधर बचेगा 1 minus 0.5 raised to 4, बराबर है, बराबर. 1 minus 0.5 raised to 4 वो कॉमन आ गया. दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय DO raised by 2. ये भी बराबर है. अभी मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल होगा एंड कैसे कैलकुलेट करोगे. So see here 6.24 into 10 raised to 6 as it is pi by 32 into DO, यहाँ पे क्यूब बचेगा, एक DO यहाँ से कैंसिल, ये 2 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 16 बचेगा. So let us cancel out this. Sir, DO is 82.67. हाँ मैडम मैं लिखना हूँ पहले. 0.5 raised to 4 is equal to 60 by 1. So now from here you will calculate DO का वैल्यू कितना है. 82.6 है 82.67 millimeter. चेक. इधर है, हाँ 82.67 mm. ठीक है. This is by using condition 1, right? Now let us go for condition 2. Condition 2 क्या है हमारा कि थीटा should be less than 1 degree. 1 degree मतलब 0.017 रेडियन एंड लेंथ कितना बोला है, 20 times the outer diameter, बराबर ना, बराबर. तो अभी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, T by J is equal to G theta by L. What is your T? Torque 6.24 10 raised to 6 divided by pi by 32. ये सेम है, D raised to 4 minus, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ as you are now aware, D raised to 4 कॉमन. ठीक है, मैं इधर लिखने वाला वो चीज. G कितना वैल्यू है, G का वैल्यू है 10 raised to 4 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एमपीए में आ जाता है, राइट ना. तो मैं इसको लिखूंगा 10 raised to 5 डायरेक्टली इनटू थीटा का वैल्यू है 0.017 अपॉन एल का वैल्यू कितना, लेंथ 20 टाइम्स द आउटर डायमीटर. और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या है, D raised to 4 DO. बार बार आ रहा है इधर. ठीक है, नीचे लिखता हूँ, इट इज D raised to 4 कॉमन 1 minus 0.5 raised to 4, राइट ना, और है ना 1 minus 0.5 raised to 4. ठीक है. तो अभी एक DO कैंसिल करो एंड बाकी सब कैंसिल करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ DO. Ninety-two point 92.74. 92.74. Seven four. Yes.
Okay, so we got this another answer. So what you can say? So therefore the कौन सा select करोगे? We will write down selecting maximum value of DO equal to 92.74 to satisfy both conditions, right? To satisfy both conditions. So therefore हमारा DO हो जाएगा 92.74 mm and हमारा inner diameter कितना हो जाएगा? उसका half कितना होता है? कितना? 46.37. ओके अंडरस्टूड. तो खाली क्या चेंज होता है? इनर्शिया चेंज होता है अगर हॉलो सेक्शन आया तो, एंड थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, मतलब क्योंकि d⁴ और माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस 0.5 या 0.8 जो भी ये रेशियो दिया है तुम्हें. ओके अंडरस्टूड. एनी डाउट? यस और नो? Fine. So what I'll do, we will stop it here, and at 2 o'clock again we will meet for remaining 2 types of numericals, similar to this but though important numerical types. We will take these two and we will go further with this series and parallel shafts also. Okay. Fine. Yes. Any doubt?